Hello guys, welcome back to our channel again. I hope you all are doing well and staying safe. So हम लोग कर रहे थे करंट अफेयर्स. अभी तक हमने 2100 करंट अफेयर्स कर लिए हैं. हमारा टारगेट है 3000 करंट अफेयर्स करने का. सो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द क्वेश्चन 2101. Which institution has named Intellect Design Arena Limited, a fintech firm, to implement the upgraded version of cloud native Intellect Quantum core banking solution? So इसका right answer है option B, that is RBI. Next question. The Reserve Bank of India will observe Digital Payments Awareness Week from. So इसका right answer है option B, that is March 7 to 11. Next question. Rupees 1991 crore will be allotted for which riverfront development in Surat city, like the Sabramati riverfront in Ahmedabad? So इसका right answer है option B, that is Tapi. अगला क्वेश्चन है which state government will set up high quality telescopes in each district to promote night sky astro tourism? So राजस्थान इसका right answer है, that is option C. अगला क्वेश्चन है Unfilled Barrels India's Oil Story is a newly launched book authored by, so it is launched by Richa Mishra, that is option A. Next question. Under the National Supercomputing Mission, which supercomputer has developed at IIT Roorkee? So Param Ganga, that is option A, is the right answer. अगला question है on March 7 which state government marked 100 years of the Pal Dhawab killings, calling it a massacre bigger than a Jallianwala Bagh? So इसका right answer option C, that is Gujarat. Next question है what is the name of the program being organized by the Ministry of Culture and Ministry of Textile to applaud Indian handicraft, handlooms and art and culture? So इसका right answer आएगा Jakorkha, that is option Jarokha, that is option B. अगला क्वेश्चन है विच कंट्री सक्सेसफुली टेस्टेड फायर्ड इट्स सेकेंड मिलिट्री सैटेलाइट नूर 2? सो इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन डी, दैट इज ईरान. नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज द नेम ऑफ द यूपीआई फैसिलिटी फॉर डिजिटल पेमेंट्स लॉन्च बाय द आरबीआई फॉर फीचर फोन्स? सो इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन ए, दैट इज यूपीआई 123 पे. सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन है Matrashakti Udyamita scheme is the initiative of which state government to encourage women entrepreneur? So इसका right answer आएगा हरियाणा, that is option D. Next question है which is the host country of the G7 agriculture minister virtual meeting? So इसका right answer आएगा option C, that is Germany. अगला क्वेश्चन है which institution has released a booklet named Beware on modus operandi of financial fraud? So RBI इसका right answer है, that is option A. अगला क्वेश्चन है which mutual fund has launched the Lakshmi for Lakshmi campaign for women empowerment? So इसका right answer आएगा option C, that is HDFC mutual fund. Next question. The Union Cabinet has approved the setting UP National Land Monetization Corporation, which will be its administrative ministry. So इसका right answer आएगा Ministry of Finance, that is option B. Next question is singing a host country agreement between the government of India and WHO will enable the establishment of the WHO Global Center for Traditional Medicine in which city of Gujarat? So इसका right answer आएगा option B, that is Jamnagar. अगला क्वेश्चन है साहित्य अकेडमीज फेस्टिवल ऑफ लेटर नोन एज साहित्य उत्सव इज बीइंग हेल्ड इन विच इंडियन सिटी? सो इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन डी, दैट इज न्यू दिल्ली. अगला क्वेश्चन है ऑपोजिट लीडर यून सुक योल हैज बीन इलेक्टेड एज अ न्यू प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री? सो साउथ कोरिया इसका राइट आंसर है, दैट इज ऑप्शन नंबर डी. नेक्स्ट क्वेश्चन ओलंपिक चैंपियन मोंडो ड्यूप्लेंटिस broke his record to create a new world record at the World Indoor Tour Silver meeting in Belgrade. He is associated with which sport? So pole vault is the right answer, that is option D. अगला क्वेश्चन है इंटरनेशनल पैरालंपिक कमिटी has recently banned athletes from which two countries from participating in the Beijing 2022 Winter Paralympics? So इसका right answer आएगा रशिया एंड Belarus, that is option C. नेक्स्ट क्वेश्चन है एनवायरमेंटल लॉयर
Rizwana Hassan will be presented with the US International Women of Courage Award 2022. She is citizen of which country? So बांग्लादेश इसका सही आंसर है, दैट इज ऑप्शन डी. अगला क्वेश्चन है हाउस workless work initiative and associated with which bank which provides possibility for those who want to return to the workforce. So इसका राइट आंसर आएगा एक्सिस बैंक, दैट इज ऑप्शन ए. अगला क्वेश्चन, Lupin Limited has named which Indian female sportswoman as its brand ambassador for the Shakti initiative. So Mary Kom is the right answer, that is option C. अगला क्वेश्चन है India's largest reclining statue of Lord Buddha to come up in which Buddhist circuit city. So इसका राइट आंसर आएगा बोध गया, that is option D. नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडियाज फर्स्ट 100% वुमेन ऑन इंडस्ट्रियल पार्क बिगिन ऑपरेशन इन विच सिटी. सो हैदराबाद इज द राइट आंसर, दैट इज ऑप्शन सी. नेक्स्ट क्वेश्चन है कौशल्या मातृत्व योजना इज द रीसेंट इनिशिएटिव ऑफ विच स्टेट गवर्नमेंट. सो छत्तीसगढ़ इसका राइट आंसर है, दैट इज ऑप्शन सी. नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडिया एंड वर्ल्ड बैंक साइन अ US 125 million loan to support access to social protection service in which state. So West Bengal is the right answer, that is option A. Next question, Pale Pragati and Patna Pragati are the schemes associated with which state? So इसका right answer है option A, that is Telangana. Next question है who has been appointed the chairman of the National Financial Reporting Authority for a period of 3 years? So इसका right answer आएगा option A, that is Ajay Bhushan Pandey. Next question, which country's parliament has elected Katalin Novak and its first ever female president? So इसका right answer आएगा Hungary, that is option B. अगला क्वेश्चन है विच स्टेट हैज अनाउंस द कमेंसिंग ऑफ द सुषमा स्वराज अवार्ड फॉर वुमेन. सो हरियाणा, दैट इज ऑप्शन ए इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट लॉन्च द वुमेन एट वर्क प्रोग्राम टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट टू स्किल्ड वुमेन. सो कर्नाटका इज द राइट आंसर, दैट इज ऑप्शन ए. नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन बोर्ड माई ईयर्स इन BCCI इज द ऑटोबायोग्राफी ऑफ विच पर्सनैलिटी दैट वॉज रिलीज बाय शरद पवार recently. So इसका राइट आंसर आएगा रत्नाकर शेट्टी, दैट इज ऑप्शन बी. नेक्स्ट क्वेश्चन, renowned golfer Tiger Woods was inducted into the World Golf Hall of Fame. Which country does he represent in the sport? So इसका राइट आंसर आएगा USA, दैट इज ऑप्शन बी. अगला क्वेश्चन है which country stood first in the medal tally at the ISSF World Cup 2022 in Cairo. So इसका राइट आंसर आएगा इंडिया, दैट इज ऑप्शन ए. Next question है Union Cabinet has approved the establishment of the National Land Monetization Corporation with how much of initial authorized share capital. So इसका right answer आएगा ₹5,000 crore, that is option A. Next question है the Supreme Court appointed its former judge Justice A.K. Sikri as chairperson of the High Power Committee formed to oversee which issue. So इसका right answer आएगा option B, that is Chardham project. नेक्स्ट क्वेश्चन है विच यूनियन मिनिस्टर रिसेंटली लॉन्च द वर्चुअल स्मार्ट ग्रिड नॉलेज सेंटर एंड इनोवेशन पार्क. सो इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन ए, दैट इज R.K. सिंह. नेक्स्ट क्वेश्चन, द थर्ड नेशनल यूथ पार्लियामेंट फेस्टिवल विच बिगिन इन न्यू दिल्ली वॉज ऑर्गेनाइज्ड बाय विच मिनिस्ट्री अलॉन्ग द लोकसभा. सो मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट, दैट इज ऑप्शन सी इज द राइट आंसर. Next question, Reserve Bank of India has declared that National Bank for Financing Infrastructure and Development will be regulated as an all India financial institution under which act. So इसका right answer आएगा RBI Act 1934. Next question है which state government has announced a special scheme namely Mukhyamantri Chasrami Kalyan Prakalpa for tea garden workers. So इसका right answer आएगा option B, that is Tripura. अगला क्वेश्चन है यूनियन सिविल एविएशन मिनिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया हैज इनॉग्रेटेड अ ड्रोन स्कूल इन विच सिटी ऑफ मध्य प्रदेश. सो इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन बी, दैट इज ग्वालियर. नेक्स्ट क्वेश्चन है देवाशीष पांडे हैज बीन अपॉइंटेड द न्यू चेयरमैन ऑफ विच एजेंसी. सो IRDAI इज द राइट आंसर, दैट इज ऑप्शन बी. अगला क्वेश्चन, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी dedicated to the nation the building of Rashtriya Raksha University situated in which state. So इसका right answer आएगा option C, that is Gujarat. Next question है who has authored a book titled solely Surabji Life and Time. So इसका right answer आएगा option B, that is Abhinav Chandrachud. अगला question,
The Ministry of MSME has launched which scheme as a combination of existing sub-schemes around incubation, design and intellectual property rights for MSMEs. So इसका right answer आएगा MSME Innovation Scheme, that is option A. Next question. The Indian Railways first Gati Shakti cargo terminal was commissioned in which division of Eastern Railway? So Asnasol is the right answer, that is option A. Next question है, a book titled Role of Labour in India's Development was released by which union minister? So इसका right answer आएगा option A, that is Bhupendra Yadav. Next question, Indian origin Nand Mulchandani has been appointed as the first ever Chief Technology Officer of which agency? So CIA is the right answer, that is option A. Next question है, according to Marcom's India Solar Project Tracker, which has become the first state in India to reach 10 GW of cumulative large-scale solar installation. So इसका right answer आएगा राजस्थान, that is option C. अगला question है, which university clinched the Khelo India University Game Championship title in 2021? So इसका right answer आएगा JN University, that is option B. अगला question है, which city is hosting India's first ever unique kind of flow chemistry technology hub? So Hyderabad is the right answer, that is option C. Next question, Mukhyamantri Muft Sewa Connection Yojana is the initiative of which state or UT? So option A, Delhi is the right answer. अगला question है, what is the name of the new train which start on June 21 to pilgrimage sites dedicated to Lord Ram across the country in the Ramayan circuit? So इसका right answer आएगा option B, that is Bharat Gaurav Tourist Train. Next question है, the Delimitation Commission set up by the Centre recently submitted its final report on the delimitation of assembly and parliamentary constituencies in which state or UT? So इसका right answer आएगा option A, that is JNK. Next question है, who has been awarded the World Food Prize 2022? Rosenways. अगला question है, where has the Union Home Minister inaugurated the Narmada, Satluj and Kaveri floating border outpost to protect the inaccessible areas of the Sundarbans? So इसका right answer है option C, that is India-Bangladesh border. Next question, which state has launched a vehicle movement tracking system, mobile app to track the vehicle carrying sand and their mining material? So इसका right answer आएगा हरियाणा, that is option D. अगला क्वेश्चन है, who has become the first Indian woman to scale 5 peaks above 8,000 meters? So इसका right answer आएगा option D, that is Priyanka Mohit. अगला क्वेश्चन है, the President of India launched the 400th birth anniversary celebration of General Lachit Borpukhan. To which kingdom did he belong? So option A, Ahom kingdom is the right answer. Next question है, who are the winner of men's and women's single title at the Badminton Asia Championship 2022? So इसका right answer आएगा Li Zia and Wang Zi. अगला question है, which two judges have been recommended by Supreme Court Collegium for appointment as apex court judges? So इसका right answer आएगा option A, that is Justice Sudhanshu Dhulia and Justice Jamesh Burjor. अगला question है, recently the India Meteorological Department has predicted the formation of which cyclone in the Bay of Bengal? So इसका right answer आएगा आसानी, that is option C. Next question है, where has the second air squadron of the Indian Coast Guard been commissioned? So इसका right answer आएगा कोची, that is option B. अगला question है, which state government is ready to launch Adhigam scheme which will provide tablet computers to students for online education? So Haryana is the right answer, that is option B. Next question, which state government has extended insurance coverage under 2 handloom and power loom weavers Nithana Bima scheme? So इसका right answer आएगा तेलंगाना, that is option B. अगला question है, which ministry has launched the CAPF पुनर्वास स्कीम? सो इसका राइट आंसर आएगा मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, दैट इज ऑप्शन सी. अगला क्वेश्चन है, बाय विनिंग गोल्ड मेडल एट द यूएस ओपन कराटे चैंपियनशिप हु हैज़ बिकम द फर्स्ट कराटे एथलीट इन द कंट्री टू विन अ गोल्ड मेडल इन द कराटे मिक्स इवेंट? सो इसका राइट आंसर आएगा सुप्रिया जाटव, दैट इज ऑप्शन ए. अगला क्वेश्चन है, विच सिटी विल होस्ट द 4th खेलो इंडिया यूथ गेम्स? सो पंचकुला इज द राइट आंसर, दैट इज ऑप्शन बी.
Next question, India's first safari dedicated to Gaurs will be set up in the Shivamoga district of which state? So इसका right answer आएगा option C, that is Karnataka. Next question है, which state government has developed an Android app, Shelly app, aimed to diagnosis and controlling lifestyle disease among people in the state? So इसका right answer आएगा option B, that is Kerala. Next question, recently which institution celebrated its 25th anniversary with the finance minister launching the Market Ka Eklavya program in the celebration? So इसका right answer आएगा option D, that is National Securities Depository Limited. अगला क्वेश्चन है, Suring and Pakyong are the two new districts of which state? So Sikkim. Option B is the right answer. Next question है, which is the host country of 15th session of the Conference of the Parties of the United Nations Convention to Combat Desertification? So इसका right answer आएगा option A, that is Cote d'Ivoire. अगला क्वेश्चन है, at which Indus Valley civilization site archaeologists have discovered a 5,000-year-old jewelry making factory? So इसका right answer आएगा राखीगढ़ी, that is option D. Next question है, which is the name of the Nepali Sherpa who recently climbed Mount Everest for the 26th time? So इसका right answer आएगा कामेरीता शेरपा, that is option A. Next question है, which manufacturing company handed over the first train setup of regional rapid transit system to NCRTC? So इसका right answer आएगा option C, that is Alstom. अगला question है, Atwa's initiative is related to rejuvenation of which lake? So इसका right answer आएगा option A, that is Dal Lake. अगला question, who has been named the chairman and managing director of Hindustan Petroleum Corporation Ltd? So Dr. Pushpa Kumar Joshi is the right answer, that is option C. Next question, recently held Defender Europe 2022 and Swift Response 2022 exercise are related to which group? So NATO is the right answer, that is option B. Next question, which state launched the second phase of the Ladli Lakshmi scheme? So Madhya Pradesh is the right answer, option B. अगला क्वेश्चन है, which Indian will receive the British Honor MBE for his service during COVID-19 pandemic? So इसका right answer आएगा option A, that is गुरु स्वामी कृष्ण मूर्ति. अगला क्वेश्चन है, Rodrigo Chaves has become the new president of which country? So Costa Rica is the right answer, that is option C. Next question, which Indian posthumously won the Pulitzer Prize 2022 for image of COVID stall in India? So Danish Siddiqui is the right answer, that is option D. Next question, P.T. Shiv Kumar Sharma, who passed away recently, played which musical instrument? So Santoor, option B is the right answer. Next question, which railway PSU has launched the PM Vani scheme? So Railtel Corporation of India is the right answer, that is option C. Next question, India's largest lithium ion battery plant starts production in which state? So Gujarat is the right answer, that is option B. अगला क्वेश्चन है, द यूनियन होम मिनिस्टर रिसेंटली इनैगोरेटेड द फर्स्ट एडिशन ऑफ वेस्ट स्टेट गवर्नमेंट्स न्यूज़पेपर? सो असम इज द राइट आंसर, दैट इज ऑप्शन बी. अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली द एम प्राइम प्ले बुक वॉज लॉन्च बाय विच इंस्टीट्यूशन? सो नीति आयोग इसका सही आंसर है. अगला क्वेश्चन, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वेंकैया नायडू रिलीज्ड अ बुक टाइटल द स्ट्रगल फॉर पुलिस रिफॉर्म्स इन इंडिया, रूरल पुलिस टू पीपल्स पुलिस, ऑथर्ड बाय? So option A, IPS Prakash Singh is the right answer. Next question, the Indian Navy's INS Kolkata recently visited which country as part of an anti-piracy operation? So इसका right answer आएगा the Djibouti, that is option C. अगला question, where in India the first Khadi Center of Excellence will open? So option D, Delhi is the right answer. Next question है, which Indian architect has been awarded the Royal Gold Medal 2022? So Balkrishna Doshi, option D is the right answer. Next question, the John Lee has been elected as the new leader of which region? So Hong Kong is the right answer, that is option B. अगला क्वेश्चन है, which is the first Asian country to join NATO's cyber defense unit? So इसका right answer आएगा option B, that is South Korea. अगला क्वेश्चन है, recently the Confederation of Indian
industry signed a pact with which country to establish a business commission? So इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन सी, दैट इज यूके। अगला क्वेश्चन है, द कंट्रीज फर्स्ट ऑर्गेनिक वेस्ट पावर्ड ईवी चार्जिंग स्टेशन हैज बीन सेट अप इन विच सिटी? सो मुंबई इज द राइट आंसर, दैट इज ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, यून स्कूल योल वॉज स्वॉन इन एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री? सो साउथ कोरिया इज द राइट आंसर, दैट इज ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चीफ इलेक्शन कमिश्नर? सो राजीव कुमार इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली द एससी ऑफ इंडिया सस्पेंडेड ऑल पेंडिंग क्रिमिनल ट्रायल्स एंड कोर्ट्स प्रोसीडिंग अंडर सेक्शन 124A of the Indian Penal Code. This section is better known as, so sedition law बोलते हैं इसको। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द 12th edition of IBA Women's World Boxing Championship has started in which city? So option B is the right answer of this question. Next question है, which chief minister received the Bangla Academy Award for relentless literary pursuit? So Mamata Banerjee is the right answer, that is option D. अगला क्वेश्चन है, what is the name of the twin identical satellite to be built by ISRO for studying upper atmosphere? Disha is the right answer, that is option B. अगला क्वेश्चन है, who has been appointed the chief executive officer and managing director of Air India? So Wilson Campbell is the right answer, that is option B. अगला क्वेश्चन है, which country will host the 2027 Southeast Asian Games? मलेशिया इसका जो है सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, which state has launched the 4 विजय योजना for fodder grower? सो ऑप्शन बी हरियाणा इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एज पर डेटा फ्रॉम द नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड विच इज़ द लार्जेस्ट मशरूम प्रोड्यूसिंग स्टेट इन इंडिया फॉर 2021 to 2022? सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, दैट इज बिहार। अगला क्वेश्चन है, विच स्टेट हैज़ अनाउंस अ फ्री ब्रेकफास्ट स्कीम फॉर गवर्नमेंट स्कूल स्टूडेंट्स? सो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, दैट इज तमिलनाडु। Next question, what is the name of the black hole at the center of the Milky Way galaxy whose first image was revealed recently? So Sagittarius is the right answer, that is option C. Next question है, which ministry launched the Bharat Tape initiative at the Plumbex India exhibition? So इसका right answer आएगा ऑप्शन B, that is Ministry of Housing and Urban Developments. Next question है, a MOU was signed between NSDC International and Hindustan Ports Private Limited to establish a Skill India International Center in which city? So वाराणसी इसका right answer आएगा, that is option A. अगला question है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी virtually addressed उत्तराखंड समारोह that was held in which state? So Gujarat is the right answer, that is option B. Next question, who has received the 2022 Templeton Prize? So इसका right answer आएगा Dr. Frank Wilczek, that is option B. अगला question है, India has contributed 8 lakh to which project to encourage the use of Hindi in the United Nations? So इसका right answer आएगा Hindi at UN, option C. Next question है, on what theme is the second global COVID summit being held? So इसका right answer है preventing pandemic fatigue and prioritizing preparedness. So option B is the right answer. अगला क्वेश्चन है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी inaugurated the world's first nano urea plant and which state? So गुजरात इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, which country became India's top trading partner in 2021 to 2022? So ऑप्शन डी इसका सही आंसर है, दैट इज यूएसए। अगला क्वेश्चन है, द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज एक्सटेंडेड विच स्कॉलरशिप स्कीम फॉर स्टूडेंट फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख फॉर अनदर 5 years? सो प्राइम मिनिस्टर स्पेशल स्कॉलरशिप स्कीम इज द राइट आंसर, दैट इज ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, नॉर्थ इंडियाज फर्स्ट इंडस्ट्रियल बायोटेक पार्क हैज बीन इनॉग्रेटेड इन विच स्टेट और यूटी? सो ऑप्शन ए JNK इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इंडियन डॉक्यूमेंट्री हैज वॉन द 2022 एलियोल्ड at Cannes Film Festival 2022? So उसका right answer आएगा All That Breathes, option D is the right answer. Next question, which state has been selected by World Health Organization for the World No Tobacco Day Award 2022? So Jharkhand is the right answer, that is option A. Next question है, who has become the first Indian to bag a World Cup medal by capturing a bronze at the 2022 ICF Para Canoe World Cup? So इसका right answer आएगा प्राची यादव, that is option C.
नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वॉज द होस्ट एजेंसी ऑफ रिसेंटली कंक्लूडेड जेन नेक्स्ट डेमोक्रेसी नेटवर्क. सो इसका राइट आंसर रहेगा इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशंस, दैट इज ऑप्शन डी. नेक्स्ट क्वेश्चन है विच सिटी होस्टेड द थर्ड एडिशन ऑफ द एशियन कॉन्फ्रेंस फ्लैगशिप डायलॉग NADI कॉन्क्लेव. सो इसका राइट आंसर आएगा गुवाहाटी, दैट इज ऑप्शन बी. नेक्स्ट क्वेश्चन है रिसेंटली विच इंडियन स्टेट हैज लॉन्च अ न्यू हेल्थ एंड वेलनेस ऐप आयु. सो इसका राइट आंसर आएगा कर्नाटका, दैट इज ऑप्शन डी. नेक्स्ट क्वेश्चन है रिसेंटली द सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग एंड विच IIT हैव अनवेल्ड इंडियाज लेटेस्ट सुपर कंप्यूटर काल परम अनंता. सो इसका राइट आंसर आएगा IIT गांधीनगर, दैट इज ऑप्शन ए. अगला क्वेश्चन है हु हैज वॉन इम्यूनाइजेशन चैंपियन अवार्ड बाय यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रंस एमरजेंसी फंड. सो इसका राइट आंसर आएगा उमर निसार, दैट इज ऑप्शन सी. नेक्स्ट क्वेश्चन रिसेंटली विच इंडियन नेवी शिप वॉज डीकमीशन फ्रॉम द नेवल डॉकयार्ड इन मुंबई. सो इसका राइट आंसर आएगा INS गोमती, दैट इज ऑप्शन ए. अगला क्वेश्चन है विच कंट्री ज्वाइन इंटरनेशनल सोलर एलियंस एन इनिशिएटिव लॉन्च बाय इंडिया एंड फ्रांस. सो इसका राइट आंसर आएगा हंगरी, दैट इज ऑप्शन ए. नेक्स्ट क्वेश्चन है विच जोन ऑफ इंडियन रेलवे हैज अचीव्ड 100% इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ इट्स 2848 किलोमीटर नेटवर्क. सो इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन डी, दैट इज ईस्टर्न रेलवे. अगला क्वेश्चन है रिसेंटली विच सुपर कंप्यूटर हैज बीन रैंक द वर्ल्ड्स फास्टेस्ट अकॉर्डिंग टू द टॉप 500 लिस्ट. सो इसका राइट आंसर आएगा फ्रंटियर, दैट इज ऑप्शन सी. नेक्स्ट क्वेश्चन है बॉर्डरहुड ऑर्गेनाइजेशन हैज कंप्लीटेड द एग्जीबिशन वर्क फॉर द नाचीपू टनल. दिस टनल इन विच स्टेट. सो अरुणाचल प्रदेश इसका सही आंसर है. अगला क्वेश्चन है अंडर PM केयर्स फॉर चिल्ड्रन स्कीम व्हाट अमाउंट वुड बी गिव एवरी मंथ टू द चिल्ड्रन वंस दे टर्न 18. सो 4000, दैट इज ऑप्शन सी इज द राइट आंसर. अगला क्वेश्चन है रिसेंटली विच स्टेट हैज ओवरटेकन उत्तर प्रदेश टू रिजाइन इट्स पोजीशन एज इंडियाज टॉप शुगर प्रोड्यूसर. सो महाराष्ट्र इज द राइट आंसर, दैट इज ऑप्शन सी. नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडियन GDP grew by what percent in 2021 2022 against 6.6% in previous fiscal. So इसका राइट आंसर 8.7%, दैट इज ऑप्शन बी. अगला क्वेश्चन है विच इंस्टीट्यूशन इन इंडियाज कोलैबोरेशन विद द इंडो कोरिया साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेंटर developed a method called CRISPR, that is option B, IIT Kharagpur. अगला क्वेश्चन है अस्त्र MK1 has been contracted for a supply by भारत डायनामिक एलटीडी. what is the type of this missile. सो इसका राइट आंसर आएगा एयर टू एयर, दैट इज ऑप्शन ए. अगला क्वेश्चन है विच नेवल स्क्वाड्रन इज न्यूली इंडक्टेड इनटू इंडियन नेवी एंड इज ऑपरेटिंग इंडिजीनियसली बिल्ड ALH MK थर्ड एयरक्राफ्ट. सो इसका राइट आंसर आएगा INAS 325, दैट इज ऑप्शन डी. अगला क्वेश्चन है द वर्ल्ड समिट ऑफ इंफॉर्मेशन सोसाइटी 2022 is being held in which city. So whenever that option A is the right answer. अगला क्वेश्चन है what is the name of Reserve Bank of India's wholly owned subsidiary भारतीय रिजर्व बैंक नोट मॉडर्न प्राइवेट लिमिटेड सेटअप मैसूरू कर्नाटका. सो इसका राइट आंसर आएगा वर्णिका, दैट इज ऑप्शन बी. अगला क्वेश्चन है विच स्टेट हैज रोल्ड आउट द स्कीम ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस ज्योति संजीवनी स्कीम. इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन डी, दैट इज कर्नाटका. अगला क्वेश्चन विच ऑफ द टू स्कीम्स विटनेस्ड द इंक्रीमेंट इन प्रीमियम्स फॉर द फर्स्ट टाइम इन 7 years. तो इसका राइट आंसर आएगा PM जीवन ज्योति बीमा योजना एंड सुरक्षा बीमा योजना, दैट इज ऑप्शन सी. अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द कंट्रीज हैज बीन फाइनलाइज्ड फॉर चीता रीइंट्रोडक्शन इन मध्य प्रदेश. तो इसका राइट आंसर आएगा साउथ अफ्रीका एंड Namibia, that is option B. अगला क्वेश्चन है अंडर विच मिशन ऑफ यूरोपियन स्पेस एजेंसी 2 spacecraft with station at the Lagrangian point L1 and L2 respectively. So Wiggle is the right answer, that is option D. I don't know the correct pronunciation. अगर कोई मिस्टेक होगी इसमें तो उसके लिए मुझे करेक्ट कर देना कमेंट बॉक्स में. अगला क्वेश्चन है विच स्कीम हैज ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज क्रॉस्ड द ₹100 crore सेल्स एंड द मंथ ऑफ मई 2022. सो इसका राइट आंसर आएगा PM जन औषधि योजना, दैट इज ऑप्शन बी. अगला क्वेश्चन है विच नेशन हैज रिसेंटली बिकम द 30th कंट्री टू ज्वाइन द कोलिशन ऑफ डिजास्टर रेसिलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर. सो
ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है व्हाट वाज द रैंक ऑफ इंडिया इन द एशिया कप हॉकी हेल्ड इन इंडोनेशिया। सो थर्ड ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कॉन्फ्रेंस वर्किंग फॉर एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी completed its 50 years of inception. So इसका राइट आंसर है यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट, दैट इज ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है विच स्टेट लॉन्च मुख्यमंत्री निबीर मत्स्य प्रकल्पा। सो इसका राइट आंसर है त्रिपुरा, दैट इज ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द सेगमेंट्स वाज इंक्लूडेड रिसेंटली इन द एबमिट ऑफ गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस। सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, दैट इज कॉपरेटिव्स। अगला क्वेश्चन है रिसेंटली विच मार्क वॉज पास्ड बाय इंडियन यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स। सो इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन बी, दैट इज 100th मार्क। अगला क्वेश्चन है विच मिनिस्ट्री हैज अप्रूव्ड द एक्सटेंशन ऑफ द पीएम एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम फॉर 5 years टिल FY26। सो इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन डी, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। अगला क्वेश्चन है व्हाट हैज बीन चूजन एज द theme of 8th International Day of Yoga to be organized in India। So इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन सी, दैट इज योगा फॉर ह्यूमैनिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज द ऑथर ऑफ द बुक एडवेंचर्स इन रीडिंग। सो रस्किन बॉन्ड, दैट इज ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है रिसेंटली विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च ACB 14,400 ऐप टू रिड्यूस corruption in which state government offices। So इसका राइट आंसर आएगा आंध्र प्रदेश, दैट इज ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है रिसेंटली हर घर दस्तक 2.0 बिगिन फ्रॉम 2-month प्रोग्राम, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस कैंपेन। सो कोविड वैक्सीनेशन, दैट इज ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ शास्त्र सीमा बल। सो इसका राइट आंसर आएगा SL थाउसेन, दैट इज ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है Oblifrasis pictus was identified in the forest of Odisha and Andhra Pradesh. What is its common name? So option D painted leopard gecko, that is option D is the right answer. अगला question है the world's largest plant Posidonia australis has been discovered on the coast of which country? So Australia is the right answer, that is option B. Next question है recently India and which country hosted the industry transition dialogue in Stockholm as a part of leadership for industry transition। So इसका right answer आएगा option A, that is Sweden। Next question है Operation Rag Chandan is in news. This operation is related to which of the following? So option B Red Sanders is the right answer, that is option B। अगला क्वेश्चन है रिसेंटली द प्राइम मिनिस्टर एड्रेस्ड गरीब कल्याण सम्मेलन इन विच सिटी। सो ऑप्शन सी शिमला इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडिया हैज कमीशन्ड अ यूनिक लिक्विड मिरर टेलीस्कोप एट विच प्लेस। सो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, दैट इज नैनीताल, उत्तराखंड। अगला क्वेश्चन गूगल डूडल रिसेंटली पेड ट्रिब्यूट टू Satyendra Nath Bose. He was best known for his role in which of the following field? So mathematics and physics is the right answer, that is option C। अगला क्वेश्चन है who is the author of new book An Intent to Serve a Civil Servant Remembers। So इसका right answer option B, that is Tajendra Khanna। अगला क्वेश्चन है UNA approves Turkey's request to change its name as which of the following? So इसका भी राइट आंसर आएगा टर्की, दैट इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑपरेशन महिला सुरक्षा इज द इनिशिएटिव ऑफ विच इंस्टीट्यूशन टू एंश्योर वुमेन्स सिक्योरिटी। सो इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन सी, दैट इज रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इंडिया एंड विच कंट्री साइंड 3 MOU फॉर एग्रीकल्चरल एक्सचेंज कॉरपोरेशन इन यूथ मटेरियल एंड वीज़ा फ्री डिज़ाइन। सो इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन डी, दैट इज सेनेगल। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच मिनिस्ट्री हैज़ लॉन्च द श्रेष्ठ स्कीम फॉर प्रमोटिंग रेजिडेंटल एजुकेशन इन हाई स्कूल। सो इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन ए, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। क्वेश्चन है विच ऑर्गेनाइजेशन हैज़ लॉन्च द लेटेस्ट फेज ऑफ इट्स नेशन वाइड फ्लैगशिप कैंपेन पुनीत सागर अभियान। तो इसका राइट आंसर आएगा NCC, दैट इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन विच
telemedicine service has been integrated with Ayushman Bharat Digital Mission as announced by the National Health Authority. So इसका right answer रहेगा e-Sanjeevani, that is option C. अगला क्वेश्चन है which institution with as forms India has launched a farmland price index. So इसका right answer रहेगा IIM Ahmedabad, that is option A. Next question, which recently the SC directed that every protected forest, national park and wildlife sanctuary across the country should have mandatory eco-sensitive zone of how much kilometers. So इसका right answer रहेगा 1 kilometer, that is option B. अगला क्वेश्चन है विच स्टेट लॉन्च अ स्पेशल हेल्थ केयर अभियान आंचल फॉर प्रेग्नेंट वुमेन. सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, दैट इज राजस्थान. अगला क्वेश्चन है IAF हेरिटेज सेंटर विल सेटअप इन विच स्टेट और यूटी टू शो केस द रोल ऑफ इंडियन एयरफोर्स इन वेरियस वॉर्स. सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, दैट इज चंडीगढ़. Next question, recently which project was in news for the initiative to track containers by using ICTM container tracking module. So इसका right answer आएगा निका, that is option A. अगला question है to improve the ease of living for common man, the government is planning to launch which portal. So इसका right answer है option D, that is Jan Samarth portal. Next question, in which financial year 2021 to 22, which country was the top export destination for the textile products of the country? So option A, USA is the right answer. Next question, who is the author of newly launched book The India Story? So option D, Bimal Jalan is the right answer, that is option D. Next question है GLOBSCC 2022 forum is hosted by which country? So Slovakia is the right answer, that is option C. अगला question, recently which company announced rolling out AMBER alerts that will help user to get notification of missing children. So इसका right answer है option C, that is Meta. अगला question, recently the announcement of which school was made by education minister. So इसका right answer है option C, that is PM Shri School. अगला क्वेश्चन है हु इज द ऑथर ऑफ द बुक द मैजिशियन ऑफ मज्दा. सो इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन बी, दैट इज अश्विन सांघी. नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू स्केल माउंट एवरेस्ट विदाउट सप्लीमेंटल ऑक्सीजन. सो पियाली बासक इज द राइट आंसर, दैट इज ऑप्शन डी. अगला क्वेश्चन है रिसेंटली द सेंटर अप्रूव्स EPF interest rate by how much percent for 2021 to 2022, the lowest in 4 decades. So इसका right answer है 8.1, that is option C. अगला क्वेश्चन है recently which Indian Navy ship were decommissioned after rendering 32 years of glorious service to India. So इसका right answer आएगा निशांक एंड अक्षय, that is option B. अगला क्वेश्चन है हु लेड द फाउंडेशन स्टोन फॉर एन ओलंपिक लेवल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स एट अहमदाबाद. तो इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन ए, दैट इज अमित शाह. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच चीफ मिनिस्टर हैज इन्वाइटेड टू अटेंड द वर्ल्ड सिटीज समिट इन सिंगापुर. सो अरविंद केजरीवाल, दैट इज ऑप्शन बी इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली हु वॉन 14th फ्रेंच ओपन. सो इसका राइट आंसर आएगा राफेल नडाल, दैट इज ऑप्शन बी. अगला क्वेश्चन है रिसेंटली इंडियन एंड बांग्लादेश कंडक्ट्स विच एक्सरसाइज एट जशोर मिलिट्री स्टेशन इन बांग्लादेश. तो इसका राइट आंसर आएगा समृति एक्स, दैट इज ऑप्शन डी. नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइफ मूवमेंट रिसेंटली सीन इन न्यूज इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग. सो इसका राइट आंसर आएगा क्लाइमेट चेंज, दैट इज ऑप्शन बी. नेक्स्ट क्वेश्चन है संत कबीर अकेडमी एंड रिसर्च सेंटर and Swadesh Darshan Yojana is recently inaugurated by President Ramnath Kovind in which of the following states? So इसका right answer है option B, that is Uttar Pradesh. अगला क्वेश्चन है रिसेंटली द वर्ल्ड्स फर्स्ट फिशिंग कैट सेंसस वाज डन एट विच लेक. सो इसका राइट आंसर आएगा चिलिका लेक, दैट इज ऑप्शन ए. अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर हैज रिसेंटली अंडरगोन evolution, that is change in course of river flow. So इसका right answer आएगा option E, that is Kosi. Next question, 90th Interpol General Assembly will take place at which place in October this year. So इसका right answer आएगा option B, that is New Delhi. Next question, India recently achieved the target of blending
how much percent of ethanol in petrol 5 months ahead of schedule? So इसका right answer आएगा option B, that is 10%. Next question है a new book title Listen to Your Heart The London Adventure authored by which of the following? So इसका right answer आएगा Ruskin Bond, that is option A. Next question, according to the recently released India Innovation Index 2021, what is the gross domestic expenditure on R&D? So इसका right answer आएगा 0.7%, that is option D. Next question, recently which of the following state has announced the introduction of Rajiv Gandhi Khel Ratna Award for sports person? So इसका right answer आएगा option A, that is Rajasthan. Next question, which of the following countries is building the world's first floating city? So इसका right answer आएगा option C, that is South Korea. अगला क्वेश्चन है recently CM of Bihar Nitish Kumar inaugurated the first phase of JP Ganga Path in Patna on the lines of Marine Drive in Mumbai. What is its total length? So इसकी total length है 20.5 km, that is option B. Next question, recently the United Nations General Assembly has adopted a resolution to designated which day as the International Day of Women in Diplomacy? So इसका right answer आएगा 24th June, that is option B. Next question, recently two African countries Gabon and Togo were admitted to the Commonwealth of Nations at the 2022 Commonwealth Heads of Government meeting in Kargil. Now it has total how many members? So इसका right answer आएगा option B, that is 56. Next question, recently who among the following from India has won the 2022 Lens Panel Pacific International Snooker title in Melbourne and 2022 Pacific International Billiards Championship? So इसका right answer आएगा Saurabh Kotri, that is option C. Next question, recently the Indian Coast Guard a new air squadron known as 840 Squadron established at which of the following place? So इसका right answer आएगा Chennai, that is option C. Next question, recently India's first brain health clinic was inaugurated in which of the following city? So इसका right answer आएगा option C, that is Bengaluru. Next question, recently legal service clinic Samta Nyay Kendra was inaugurated in Chandigarh. It is exclusive meant for which section of the population? So इसका right answer आएगा transgenders, that is option D. Next question, recently the Union government has rejected India's ranking in the Global Hunger Index 2021. What was India's rank in the index? So option D, 101st is the right answer. Next question, recently Union Environment Ministry's Export Appraisal Committee has approved the construction of Myanmar, Malaysia, India, Singapore Transit Submarine Cable System. It will connect which of the following two Indian cities with the system? So इसका right answer आएगा Mumbai and Chennai. Next question, recently a maritime partnership exercise was conducted between India and which of the following countries in the Andaman Sea? So इसका right answer आएगा option C, that is Japan. Next question, recently who among the following has been appointed as the interim CEO of National Land Management Corporation? So इसका right answer आएगा Sanjay Kumar Jain, that is option A. Next question, recently which of the following countries has launched the Wetian Space Station module? So इसका right answer आएगा China, that is option D. Next question, recently which of the following state government has launched the Family Doctor Project? So Andhra Pradesh is the right answer, that is option B. Next question, recently Neeraj Chopra became the second Indian to win a medal in the World Athletics Championship 2022. Oregon, USA, who was the first Indian to win the medal at the World Athletics Championship? So इसका right answer आएगा Anju Bobby George, that is option A. Next question, what is the rank of India in the medal tally of the ISSF Shooting World Cup 2022 which was held in Changwon, South Korea? So इसका right answer आएगा option A, that is first. Next question, recently the Union Cabinet has approved a memorandum of association by India and establishment of BIMSTEC Technology Transfer Center. It is being established in which of the following countries? So इसका right answer आएगा Sri Lanka, that is option B. Next question है, recently PM Narendra Modi released a special postal stamp for Mumbai Samachar, Asia's oldest running newspaper, to commemorating
विच एनिवर्सरी ऑफ द न्यूज़पेपर? सो इसका राइट आंसर आएगा 200 ईयर्स, दैट इज ऑप्शन डी. अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली पीएम नरेंद्र मोदी हैज़ अर्ज्ड सिटीजन टू शेयर देयर ट्रिब्यूट्स to our freedom fighter on digital Jyot. It is being established in which of the following cities? So इसका right answer आएगा option A, that is New Delhi. Next question, recently France has signed the Artemis Accord. It is being established by which of the following space agency? So इसका right answer आएगा NASA, that is option B. Next question, recently monitoring app for seamless inspections was seen in news. It is related to which of the section of the population? So इसका right answer आएगा option C, that is children. नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन हैज़ अप्रूव्ड अ USD 96.3 million लोन टू फंड सेफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन प्रोजेक्ट इन हिमाचल प्रदेश? सो इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन बी, दैट इज एशियन डेवलपमेंट बैंक. नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली द Sakurajima volcano erupted. It is located in which of the following countries? So इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, दैट इज जापान. Next question, recently the BA 2.75 COVID variant has been nicknamed Centrus. It is a subvariant of which of the following? So Omicron is the right answer, that is option A. Next question है, recently which of the following companies has introduced a new app Viva Engage? So इसका right answer आएगा Microsoft, that is option A. Next question, recently Sheikh Mohammed Sahab Al Saleem has been appointed as a new prime minister of which of the following countries? So Kuwait is the right answer, that is option C. So next question is, recently which of the following state has approved the creation of Barak Bhuvan Wildlife Sanctuary? So इसका right answer आएगा option A, that is Assam. अगला question, recently International Cricket Council has decided that India will host the ICC Women's ODI World Cup in which year? So इसका right answer आएगा 2025, that is option B. अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली इंडिया हैज़ एडेड 5 more Ramsar sites. Now total how many Ramsar sites are there in India? So 54 is the right answer, that is option C. Recently which of the following ministries has launched Swadesh Darshan Scheme 2.0? So इसका right answer आएगा Ministry of Tourism, that is option A. अगला क्वेश्चन है, who among the following were the Indian flag bearer at the 2022 Commonwealth Games opening ceremony? So इसका right answer आएगा मनप्रीत सिंह and PV Sindhu, that is option C. Next question है, recently government of Rajasthan has signed a MOU with which of the following state governments to set up first ever all women run cooperative bank? So इसका right answer आएगा तेलंगाना, that is option B. अगला question, recently who among the following has been appointed as a chief economist of the World Bank? So इसका right answer आएगा Andamit Gill, that is option D. अगला question, recently which of the following institution has launched the Nirman Accelerator program to focus on manufacturing startups engaged in healthcare and agriculture? So इसका right answer आएगा IIT कानपुर, that is option C. अगला क्वेश्चन है, recently India's economic growth forecast has been reduced from 8.2% to 7.4% for the year of 2022 to 23 in which World Economic Outlook update. It is released by which of the following organization? So इसका right answer आएगा International Monetary Fund, that is option B. अगला क्वेश्चन है, recently Family Courts Bill 2022 was passed in Lok Sabha. It seeks to establish family courts in which of the following states? So इसका right answer आएगा हिमाचल प्रदेश and नागालैंड, that is option C. अगला क्वेश्चन है, recently Parsar Bharti has signed a memorandum of understanding with which of the following institution to set up a center of excellence for media and broadcasting technology? So इसका right answer आएगा IIT कानपुर, that is option A. अगला क्वेश्चन है, which of the following departments has launched the दीन दयाल स्पर्श योजना? So इसका right answer आएगा Department of Post. अगला क्वेश्चन है, recently the Union Cabinet has approved the merger of Bharat Broadband Network Limited with which of the following? So इसका right answer आएगा BSNL, that is option B. अगला क्वेश्चन है, recently the Union Cabinet has approved the investment of rupees 12,000 crore by Bharat Petro Resources Ltd for the development of BMC 11
concession project in which of the following countries? So इसका right answer है Brazil, that is option B. अगला क्वेश्चन है, recently which state has approved the setup of a new कर्माझीरी सेंचुरी? सो इसका राइट आंसर रहेगा मध्य प्रदेश, दैट इज ऑप्शन बी. अगला क्वेश्चन, रिसेंटली द यूनियन गवर्नमेंट हैज क्लियर्ड हाउ मच अमाउंट फॉर स्टेट ऑन टेलीकॉम कंपनी भारत संचार निगम एलटीडी with an aim to upgrade the operator's network to 4G. तो इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन ए, दैट इज ₹1.64 लाख करोड़. नेक्स्ट क्वेश्चन, recently England's Leicester cricket ground has been named after which of the following Indian cricketer? So इसका राइट आंसर आएगा सुनील गावस्कर, दैट इज ऑप्शन बी. अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली द यूनियन गवर्नमेंट हैज सेट अ टारगेट दैट एम्स एट रिड्यूसिंग स्टंटिंग एंड अंडर न्यूट्रिशन among children below 6 years by how much percent each year? So इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन बी, दैट इज 2%. नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट डेटा विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टॉप एफडीआई सोर्स नेशन फॉर इंडिया इन FY 21 to 22? सो इसका राइट आंसर आएगा सिंगापुर, दैट इज ऑप्शन ए. अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली इंडिया हैज साइंड अ मेमोरेंडम ऑफ कॉर्पोरेशन विद विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज फॉर प्रिविलेज्ड रिलेशंस बिटवीन द पार्लियामेंट ऑफ बोथ द नेशन? सो इसका राइट आंसर आएगा मोजाम्बिक, दैट इज ऑप्शन बी. अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली इंडियाज फर्स्ट इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत was delivered to Indian Navy. It is being built by which of the following companies? So इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन ए, दैट इज कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड, कोची. अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली PM नरेंद्र मोदी laid the foundation stone for various project collectively worth more than ₹1,000 crore at the Sabar Dairy in Sabarkantha district. It is located in which of the following states? So इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, दैट इज गुजरात. नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री टू लॉन्च द डेडिकेटेड सेमीकंडक्टर पॉलिसी? सो इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन बी, दैट इज गुजरात. अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली इंडिया हैव सक्सेसफुली कंप्लीटेड द फर्स्ट क्रॉस बॉर्डर लॉजिस्टिक ऑफ containerized cargo through inland waterways with which of the following countries? So इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, दैट इज बांग्लादेश. नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली PM दक्ष योजना वॉज सीन इन न्यूज. इट इज इम्प्लीमेंटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्रीज? सो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट. नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली PM नरेंद्र मोदी हैज लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ द हेडक्वार्टर्स building of the International Financial Service Center Authority in which of the following cities? So इसका राइट आंसर आएगा गिफ्ट सिटी, दैट इज ऑप्शन सी. अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली इजिप्ट एंड विच इंडियन कंपनी हैव साइंड अ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग टू कंस्ट्रक्ट अ ग्रीन हाइड्रोजन फैक्ट्री इन सुएज कैनाल इकोनॉमिक जोन? सो इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन सी, दैट इज रिन्यू पावर. अगला क्वेश्चन, recently who among the following has been appointed as India's High Commissioner to Bangladesh? So इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन ई, दैट इज प्रणय कुमार वर्मा. नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली एशिया कप 2022 has shifted from Sri Lanka to which of the following country? So इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन सी, दैट इज UAE. नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली which of the following state has launched the Chief Minister's Breakfast Scheme in the government primary school? सो इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन डी, दैट इज तमिलनाडु. अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन हैज प्रेजेंटेड हु अमंगस्ट द फॉलोइंग विद द सर विंस्टन चर्चिल लीडरशिप अवार्ड? सो इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन बी. अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली द पंजाब गवर्नमेंट हैज साइंड एन एग्रीमेंट फॉर बिकमिंग अ मेंबर ऑफ अंडर 2 coalition. It is related to which of the following? So global warming, option A is the right answer. अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली PM नरेंद्र मोदी इनैगुरेटेड द 100 मेगावाट रामगुंडम फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? सो इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन बी, दैट इज तेलंगाना. नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट गवर्नमेंट्स हैज लॉन्च द महतारी न्याथ रथ फॉर वुमेन राइट्स अवेयरनेस? सो इसका राइट आंसर आएगा छत्तीसगढ़, दैट इज ऑप्शन डी. अगला क्वेश्चन है, द गवर्नमेंट हैज सरपास्ड द फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन टारगेट सेट अंडर द
अंतिम निर्भर भारत रोजगार योजना, which ministry is responsible for the scheme? So Ministry of Labor and Employment is the right answer. अगला क्वेश्चन है विच कंट्री इज ऑर्गेनाइजिंग द इंडो पैसिफिक एंड्योर एक्सरसाइज इन अक्टूबर 2022 ऑफ विच इंडियन इज अ पार्टिसिपेंट. सो इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन बी, दैट इज ऑस्ट्रेलिया. नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच डिस्ट्रिक्ट जम्मू एंड कश्मीर अ न्यू seismological observatory has been inaugurated. So Udhampur, that is option B is the right answer. अगला क्वेश्चन है यूनियन गवर्नमेंट स्टेटेड दैट द पर्पल रेवोल्यूशन हैज एनकरेज agri-tech startups. Under which mission is the Purple Revolution Initiative? So इसका आएगा मिशन अरोमा, that is option A. अगला क्वेश्चन है which edition of St. Petersburg International Economic Forum was held recently? So इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन C, that is 25th edition. अगला क्वेश्चन है हु हैज़ बीन नेम्ड एज द चेयरमैन ऑफ एडवाइजरी कमिटी to assist the Supreme Court appointed committee of administrators which is running the day-to-day affairs of AIFF. So इसका राइट आंसर आएगा रंजीत बजाज, that is option A. अगला क्वेश्चन है where is the 26th Commonwealth Head of Government meeting being held? So इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन ए. अगला क्वेश्चन है विच इंस्टीट्यूशन ऑर्गेनाइजेशन रिसेंटली लॉन्च द GSAT-24 सैटेलाइट? सो इसका राइट आंसर आएगा NSIL, दैट इज ऑप्शन डी. नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज द करंट रैंकिंग ऑफ इंडिया ग्लोबली इन द ग्लोबल स्किल रिपोर्ट 2022 बाय कोरोसेरा? सो इसका राइट आंसर आएगा 68, दैट इज ऑप्शन बी. नेक्स्ट क्वेश्चन which ministry has given an order to discontinue manual attendance for Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme worksites with more than 20 workers? So इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन ए, दैट इज यूनियन रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री. नेक्स्ट क्वेश्चन है विच पोर्टल हैज लॉन्च टू प्रोवाइड रियल टाइम डेटा टू ऑल स्टेक होल्डर एट द इनॉग्रेशन ऑफ वाणिज्य भवन इन दिल्ली? सो इसका राइट आंसर आएगा निर्यात, दैट इज ऑप्शन बी. अगला क्वेश्चन है इन्वायरमेंटल ग्रुप हैव क्रिटिसाइज द प्रोजेक्ट टू लिंक द बेदती एंड वर्धा rivers, calling it uniscientific and waste of public money. These rivers flow in which state? So इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन डी, दैट इज कर्नाटका. अगला क्वेश्चन है विच कंट्री विल होस्ट 15th Conference of Parties to the Convention on Biological Diversity? So इसका राइट आंसर आएगा कनाडा, दैट इज ऑप्शन बी. नेक्स्ट क्वेश्चन विच स्टेट सेलिब्रेट्स द साओ जाओ फेस्टिवल? सो इसका राइट आंसर आएगा गोवा, दैट इज ऑप्शन सी. नेक्स्ट क्वेश्चन है चीफ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट रिसेंटली गिफ्टेड द पतचित्रा पेंटिंग टू पोप फ्रांसिस इन Vatican City? So इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन ए, दैट इज ओडिशा. नेक्स्ट क्वेश्चन है एमओ बस, अ बस सर्विस दैट हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड बाय द यूनाइटेड नेशन एज वन ऑफ 10 ग्लोबल recipients of its annual public service awards for 2022 belongs to which country? So इसका राइट आंसर आएगा इंडिया, दैट इज ऑप्शन ए. अगला क्वेश्चन इन विच कंट्री has ONGC Videsh Limited recently made an oil discovery? So इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन बी, दैट इज कोलंबिया. अगला क्वेश्चन पद्मा ब्रिज प्रोजेक्ट इज इन न्यूज दीज डेज, इट इज इन विच कंट्री? सो बांग्लादेश इज द राइट आंसर, दैट इज ऑप्शन सी. नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू द surrogacy rules parents through surrogacy must purchase general health insurance coverage for a surrogate mother for 36 months. Which ministry has issued these rules? So इसका आएगा मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, दैट इज ऑप्शन बी. अगला क्वेश्चन है पीएम हैज रिसेंटली डेडिकेटेड द मेन टनल एट 5 underpasses as an integral part of the Pragati Maidan redevelopment project. This project is developed in which city? So इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, दैट इज दिल्ली. नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ NDB Indian Regional Office in Gujarat International Finance Tech City? So इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन ई, दैट इज डॉक्टर DJ पंडियन. अगला क्वेश्चन है विच यूनियन टेरिटरी विल होस्ट द 26th सिंधु दर्शन यात्रा? सो इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन ए, दैट इज लद्दाख. अगला क्वेश्चन है रिसेंटली द इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन अनवेल्ड इट्स पेटेंटेड इंडिजीनियस सोलर
cooktop. What is the name of the cooktop? So इसका right answer आएगा सूर्य नूतन, that is option B. Next question, who has been appointed as the Director General of National Investigation Agency? So इसका right answer आएगा option B, that is दिनकर गुप्ता. अगला क्वेश्चन है, which airport in the country has become the first to run entire on hydro and solar power? So इसका right answer आएगा option B, that is Delhi Airport. Next question, which month is celebrated as LGBTQ Pride Month? So June is the right answer, that is option A. अगला क्वेश्चन है, Ambubachi Mela is celebrated during the monsoon season when the sun transit to the zodiac of Mithuna. This Mela is held in which state? So इसका right answer आएगा option B, that is Assam. अगला क्वेश्चन है, which government program has recently received a 47 million boost from the World Bank? So इसका right answer आएगा option A, that is mission कर्मयोगी. अगला क्वेश्चन है, the National Mission on National Air Quality Resource Framework of India was inaugurated by the principal scientific advisor to the government who has developed NARFI. So इसका right answer आएगा National Institution of Advanced Studies, that is option B. अगला क्वेश्चन है, who is appointed as the CEO of नीति आयोग? So इसका right answer आएगा परमेश्वरन लहर, that is option B. अगला क्वेश्चन है, recently vertical launch short range surface to air missile was successfully flight tested at integrated test range Chandipur. Where is Chandipur located? So इसका right answer आएगा Odisha, that is option B. Next question, who has become the first Indian cyclist to win silver at Asian Track Championship? So उसका right answer आएगा Ronaldo Singh, that is option B. Next question, which bank has launched a digital platform Campus Power to assist students who want to pursue higher education in India and abroad? So इसका right answer आएगा ICICI, that is option B. Next question, which state won their Madan Ranji Trophy title in 2022? So इसका right answer आएगा मध्य प्रदेश, that is option B. अगला question है, with which company Zomato has recently reached an agreement to acquire it for 568 million? So इसका right answer आएगा Blinkit, that is option C. अगला क्वेश्चन, recently which country launched a solid fuel rocket named Zuljana into space? So इसका right answer आएगा option A, that is Iran. अगला क्वेश्चन है, which city Mannar Bird Village is said to be declared as the wetland? So इसका right answer आएगा उदयपुर, that is option A. अगला क्वेश्चन है, which state has launched the single use plastic buyback scheme? So इसका right answer आएगा हिमाचल प्रदेश. अगला क्वेश्चन एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो, which organization proposed a draft law for halving pesticides used by 2030? So इसका right answer आएगा ऑप्शन बी, दैट इज EU. सो ये थी हमारी आज की वीडियो. आई होप आपको अच्छी लगी हो. अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो.